Okay. Hello everyone. Ngasi akhoi tamdoriba topic sina elimination reaction. Mamangda akhoi substitution reaction tamgre. Substitution reaction gi manungda nucleophilic substitution, electrophilic amadi free radical ahum akhoi tamgre. Ngasi akhoi elimination reaction tambasida magi type ani tamakani E1 haibaga E2 haibaga. खरं म्हणणं ताव दुगा substitution nucleophilic का elimination reaction का खितंग confusing होय बने कईगिनो हरा तारती similarities खरा यावे and difference खरा यावे. Fine. So you have to listen the whole lecture to make sure that you don't get confused with substitution nucleophilic and elimination reaction. Fine. Okay. So let's start our today's class. Elimination reaction. And today's Teachers Day, so happy Teachers Day to everyone. Elimination reaction. So elimination reaction is the saturated hydrocarbon amadaki unsaturated hydrocarbon amagi conversion tawudo elimination reaction is the taunai. So conversion of saturated hydrocarbon to unsaturated hydrocarbon by elimination of atom. Fine. Okay. कह रहे saturated hydrocarbon amadaki unsaturated hydrocarbon की conversion तवुदुबु कोइना elimination reaction कवे. Elimination दी ममिंग दसुन खंगनी English word अमानिना elimination है तागती लथोपा पोत अमा कोइना लथोकी बाय तारे system दगी. Fine. Okay. Next point. It occurs at high temperature. So remember that the difference between substitution nucleophilic and elimination reaction is temperature. Substitution nucleophilic take place at lower temperature. Elimination reaction take place at higher temperature. So why I'm telling you this right now? Because after we complete E1 reaction, there will be some questions that you have to write down the answer. In that case, you might get confused. Either it is substitution nucleophilic or elimination. So for that, you have to remember elimination will always take in high temperature and substitution will take at lower temperature. Fine. Substitution nucleophilic specifically, electrophilic and free radical high gite ko aina harijana substitution nucleophilic. Confuse sakano substitution nucleophilic tazo makal ahum thokpane ko. So we'll talk about our first type of elimination reaction, that is E1 elimination reaction. Elimination reaction. Fine. So E1 elimination reactions is a step anida tawgani, meaning it takes it complete a reaction in two step mechanism ibakanda step anida loidoine. Yare, let's take an example. Let's say with the alkyl halide ama period se. Fine. Alkyl halide hai targeti halogen yauba. So E1 reaction dana koina weak base is nahi, weak base with the with some heat ko temperature khara wangdradi reaction je tawdeva. Fine. And sida let's say halogen amma yawer je. Fine. So sigi hydrogen je smaniye ke sida 2 harga sida na hydrogen. So elimination reaction tawba ganda sigi laiba hydrogen jiga sigi laiba halogen jiga punna eliminate tawharni aduga kai phangani noida unsaturated hydrocarbon CH2 CH2 plus HX. Fine. ahan bada ka yawe single bond ne saturated hydrocarbon, then double bond yawrom ne na unsaturated hydrocarbon da ontokre. Saturated ki meaning ta amni khale single bond yawba, unsaturated hai tardi carbon carbon masen dana double bond natraga triple bond yawba adu myam to koina unsaturated hydrocarbon hena khangnai. Fine. So
saturated hydrocarbon amadagi unsaturated hydrocarbon amada conversion tawi kai yauraga weak base and some heat kai kawe duna E1 elimination reaction. Fine. Halogen na samiba carbon jina we call it alpha carbon. Hek maga thangnariba carbon duna beta. Beta gi ek thangnabuduna khoina kai haibirani gamma. Fine. So for now elimination reaction da di khoida alpha ga beta da tang enough ore. Fine. Halogen samambaduna alpha magi ek thangnabuduna beta. Adumaina karigumba alcohol samam targati alcohol samambaduna kai tare alpha thangnabuduna beta. So functional group samamba natraga substituent samamba carbon duna alpha consider tawe thangnabuduna beta. So makha tarakpada si wahije palakani. So confuse oigana ko. Fine. So we took an example. Now let's take an halogen lause ko. Let's say chlorine. So we have CH3, CH2, and let's say we took chlorine. Weak base ta let's say we have water. Substitution nucleophilic ta so water sizina gi khoina nucleophilic ki da weak base hoina lawda. So sida kai phangani no gi product se CH2 double bond CH2 plus HCl. Fine. Sigi mechanism to is a mechanism irak ta agadi hena gyantani mechanism. So again it take place in two step. Fine. Step number 1, generation of carbocation. So we have alkyl halide. Alkyl halide se karam bano CH3 CH2 and Cl. Fine. अखोइना हीट तौरपनेना रिएक्शन जे टेम्परेचर वांगना तौरपनेना सिगी लेरिबा क्लोरीन जिगा सिगी कार्बन जिगी बॉन्ड जे हेटेरोलिटिक फ्यूजन की थ्रू द बॉन्ड जे कायग्रानी एंड नोइना खंगिने क्लोरीन गा कार्बन गा कंपैरिजन तौबदा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो क्लोरीन जे गदौगे तागदी इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ तौहरनी अदुगा कयोने थोकरनी नोइदा CH3 CH2 plus and Cl minus. Fine. Okay. Second step, this is your carbocation. Carbocation is electrophile है ना जो खंगना बने. Removal of beta hydrogen. Got it? Removal of beta hydrogen, or you can say removal of proton. Animak wahai amang te sizinaba yai kaisho akaiba leite ko. So carbocation phangise koide kai phange CH2 hairaga smaina H hairage and CH2 plus. So hujikta khoina kai base lauhi ge water lauhi dabra water se kai base hoige weak base hoye. Fine. And water से weak base नेबा. So water की oxygen दा के यावी लोन पे याव दबरा लोन पे यावरक पनेना मा से basic property show तवे electron donate तवंग अंबगी electron gain तवरगना acidic property electron donate तवरगना base property. मैं आपसे खंगम गनी खले acid का base की खेतना बजे. Fine. So सीधा ले रिबा carbocation ये थानबा कार्बन से बीटा कार्बन से यावरिबा हाइड्रोजन से कइदौगे तागति दे act as a acid. Fine. Acid है तागति प्रोटॉन से लूज तवंग अमेबा सिगी बीटा कार्बन सिना. Fine. So प्रोटॉन से लूज तवसे करम कांदा गमनी बेस यारो कांदा. Fine. So what happens सिगी लेरिबा बॉन्ड से सिदा मूव तौरानी एंड हाइड्रोजन जिना प्रोटॉन की फॉर्म द थोखरनी एंड कनागा पुनखरनी सिगी बेस सिगा. अगेन बेस यावद्रगदी प्रोटॉन रिलीज तौबा यादे अदु मखंगो. सो बीटा कार्बन एक्ट एज एन एसिड कमाइना प्रोटॉन जे लूज तौरगा. फाइन. ओके. सो कई फंगनी सिदा नोइगे CH2 double bond and CH2 कई थोकरनी सिदा H3O plus hydro oxygen ना लोन पे डोनेट तौबगी H3O plus. Fine. Next step to the E दरसो के शुकाई दे सी की स्टेप्स इन लास्ट की इधि से
H3O plus sida ngasai Cl minus 1 thokrise mana hoji kaina act tawrani as an base, and H3O plus will act as a acid. It will release an proton. So kaina phangani H2O plus HCl. Water da so H ahenba yaubni kaidawe maso proton gi from the thokrani. H2O plus are acidic. Fine. So H plus the thokraga CgCl minus ka pullani and HCl phangani and H2O. So ngasai gi byproduct ta khone HCl irise adugineba. So H2O act as a catalyst in case of E1 elimination reaction, or you can say elimination reaction. Mamangi substitution nucleophilic ki case tadi noina sizina giba nucleophile do attach taurine reaction to the reactant to the, but elimination reaction tadi it act as a catalyst. So remember that. Fine. Okay. So you how the mechanism step ani with the kai khange ki elimination E1 से weak base याव नहीं यारे weak base याव नहीं. Example when panbada CH3OH को methanol adagi ethanol si जो weak base ने water असीगुम्बा जे खोइना सिजिनादुइने ग्यान तारे को. Okay. Next the reaction intermediate ta kai phangi khoida carbocation phangi. So carbocation phange heragati magi property ama yauki kayena rearrangement kauba yade. Carbocation bu phangak targadi rearrangement tawbagi possibility laye. Rearrangement is possible tawbu yargadi ko if possible hayo, if possible. Next it occurs at high temperature. Fine. Rate of reaction karambana thuna reaction thok to no ye. So rate of reaction da noigi carbon ga halogen ga bond do thuna break to wangami ngai rate of reaction je mana wang doine. So obviously bromine iodine comparison tawda iodine gina size chawbane electronegative khara handai aduna bond je break tawda thuye ko. Then RF and last will be your RCl. So sigi trend sidi no mamang to tamani khale RF na kaidawi bond break tawda as compared to Cl dagi heli maram ka due to smaller size of fluorine there is a repulsion between the at electron cloud of fluorine with electron cloud of carbon. So adugi marta repulsion layer panina bond je thuna break tawre kyan tare ko siba khoina khange. Fine. So reaction on pige answer guess taro. Okay. So C की reaction जब तो try करो answer से इरो हम तो हाइब्रिड इंगे 1 2 and 3. Fine. C की answer is है. So first of all what we will do, we will write down the mechanism. Okay. Answer खंग रगदी mechanism तरो try तो अदुन answer थुना थोपने. Okay. So even mechanism ने ना कई दाव नहीं होना. Step number 1 generation of carbocation. Fine. So CH3 CH2 CH2 and CH2 and halogen. So step number 1 the temperature yaurani ko heat yaurani aduga ke dawharni chlorine sina electron se withdraw dawharni kai phangani noida carbocation ama phangani CH2 CH2 and CH2 plus charge. And carbocation से कई गुम्बा मागी degree of carbon से होंगमा ngam targadi hongdor kani maram kai pikre na hyper conjugation ki through the mo stability gain to ngambagi. Fine. So carbon से the plus charge कई तौर कई दले माजे primary degree. By chance करी गुम्बा से the plus यारों में दिमा कई दोन करनी secondary. So obviously carbocation will positive charge will shift from here to this by shifting one molecule of one atom of hydrogen. Hydrogen mathangda methyl phenyl then methyl. So hydrogen is shifting amata warni rearrangement tawrani ko akoina wahai da kayna sinarni hydrogen shifting hai na so inai. So kai phangani uje. So sigi particular topic se khangdragadi carbocation reaction intermediate to yengo aduda yaugimne kamai tawri no ito.
फाइन ओके सो सिदा हाइड्रोजन शिफ्टिंग तौरगा कार्बोकेटाइन फंगे प्राइमरी दगी सेकेंडरी सो सेकेंड स्टेप लासे स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 दा कहिगे कार्बोकेटाइन सिदा मांगोंदा यावरिबा बीटा हाइड्रोजन in the presence of base fine so beta hydrogen se hujingo kaigumba sina alpha ne heragadi beta hydrogen sida su yawi and sida su yawi karambana answer chumdoino ye okay yengo kaigumba sigi hydrogen se thoki tagadi double bond sida phangani khangi ne noi adegi sigi hydrogen se thok tagadi double bond sida phangani anima ire yengse but I will write the major answer fine ji phawgidi major ige aduga ai khetna batake kaigi la ino hede okay cml ere possibility okay ani subana possibility kaino yengo if by chance sigi oina hydrogen jina thoki targadi kai phangni noida ch3 ch2 ch double bond and ch2 phangoidra sumaina so question la hai sina chumira natraga sina chumira hai well according to Sedgwick rule any alkene amada more substituted are more stable as compared to less substituted alkene fine so mechanism iba kandadi measure hai tarene answer khoida khwaidi gamna phangbai possibility wangbaduna ir ani but kaigumba just reaction khatang palam targadi you have to write the both answer major phangbaga minor phangbaga so si budi khoi answer lerni ko main da major product hai tare aduga sina noigi minor hai tare so reaction mechanism irakpa kandadi si bhautang iranoina losin bigrani makha tarpada sigi h2o si jo kai don thokharni h3o plus haina adu khangi ne h3o plus ka ngasai gi cl minus ka reaction tawdi kai phangani h2o plus hcl fine so your major answer will be this confuse oi hino ai tala kani maram kai no hedo huji phawi di khangjilo sigi major answer kai tare ch3 ch double bond ch and ch3 this will be your major product but there is another product that is minor ch3 ch2 single bond ch double bond and ch this will be your minor answer animak ki possibility lai amana major amana minor sumaina karigumba reaction ir oherak tagadi you have to write the major and minor both mechanism iba kanda noina major khatang iram tagadi noida marks amta ka oi aduga marks adum phangni fine so the reason behind is there is a rule we call it Sedgwick rule what Sedgwick rule mana kai hege tagadi more substituted alkene are more stable okay sigi approach se ani thona la ani noina ani mak tamkhre khale ko amadi noigi kayani previous topic amada takhimne ki cis isomer amadi trans isomer amaga comparison tawba kanda karambana hena stable oige haibase ko yenga zengo so kahere Sedgwick rule more substituted alkene are more stable fine product animu yekse aduga amana major kai gi oirino amana minor kai dobi oirino hebse yenga se fine so major product ta koina kai gi ge sumain igidra aduga minor gidan kai ye ch3 ch2
CH double bond and CH2. Let's draw this in an open structure. अहानबगीसे ऐना येक तारगदि सुमान येक याब्रा इंगो येक पे आइको ट्रांस स्ट्रक्चर येक पे वाने ना अनि सुबने सुमान ये लागे ओके नोय खंगी ने स्माइना substituted alkene याव substitute है double bonded atoms माने carbon यावर कांदा double bonded carbon यावर कांदा reaction अम थोप कांदा if carbon अम दा electron से वालक तागदी को by chance let's say electron सीधा shifting तौगरेर से सीधा plus charge कैरी तारो करनी plus कैरी तारो कांदा सिगी लेरिबा carbon सिना के दोबंग में hyper conjugation की थ्रू दा electron से पिसिन मंगा में fine अदुमाइना सिगी लेरिबा पोसिना सीधा प्लस कारक तारदी हाइपर कंजुगेशन की थ्रू द सिगी कार्बन कैदोबंग में सिगी कार्बन से प्लस के तरपदो स्टेबल ओहनबंग में which means मथा किसिदा सीना सो कैदोबंग में हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ तोंग में सिगी से नो कैदोबंग में हाइपर कंजुगेशन की थ्रू द स्टेबिलिटी गेन तोंग में बट सिगी केस नंबर 2 से माइनर फंगीबा केस से सीधा कैदोवे कैगुंबा सीधा प्लस कारम मदी बाय चांस हाइपर कंजुगेशन से कनाना तंगमनी हेक थंगनरिबा कार्बन जिना so hydrogen क्या यावे माउंदा ani which means the possible no bond resonance that can be drawn in this structure is only 2 while in this case som da iso ahumra ke pyani som da iso ahumra ke pyani ahum hydrogen yawbagi so hyper conjugation masing yamna yekpa yaga targadi noigi stability gain tawso helakani adu matam gibana trunoina अदुगी बेसिस तने सेजेव रूल न कह है तारगदी सिगी लेरिबा मॉलिक्यूल सेना हेना मेजर होइनी सिगी सेना माइनर होइनी एंड अदुमाइना केमिकल रिएक्शन तौबो कांदसो कई थिंगनागे स्माइना लाइबा इरिबा खोइगी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जिना जो प्रोडक्ट फंगबा हेल ए मसिंगदा fine so we say whenever we do elimination reaction and if there is a possibility of getting two answer then the more substituted alkene is more stable or you can say the major product than the less substituted alkene gen tare nikhalle okay sida loire Sedgwick rule की खेतना बजे को uses है तारे कि major product करम मन फंगिनो minor product करम मन फंगिनो है बकी खेतना बजे fine okay नो identify तारो SN1 थोकद्रा नत्रगा elimination reaction थोकद्रा इसे fine okay let's take our first example okay question हम पिरकले alkyl halide ने अमा अदुगा सोमदना base अमा यारोकले सिदसु base अमा यारोकले अमागिना 10 degree Celsius अमागिना 75 degree Celsius so yeah listen very carefully substitution nucleophilic reaction तंबा कांदा खोइना SN1 अमादी SN2 तमगरे अहानबदा elimination reaction तमद्रिंगेदा अनीजिगी difference फसन तमो अनीजिगी खेतना फसन तमो अदु मतुंगदा elimination reaction दा लाओ हुजी हुजी नोइना elimination reaction तमना तमना substitution nucleophilic खंग देहरगदी अहानबदा सिगी lecture से continue तवो अदुगा मखातन लाओ नत्रगदी reaction तवोदा answer identify तवो ngमोय fine okay so सिगी लेरिबा SN reaction जिगा SN1 हैबा जिगा elimination E1 हैबा जिगा almost मानैये कैदा मानरिनो हायरक तागदी अनिमकता कार्बोकेटाइन यावे याये अनिमकता खोइना weak base लौनै यारे अनिमकता weak base लौनै अनिमकता खोइना कार्बोकेटाइन लौवे सीजे similarities हाइतारे अनिमकता मबानी की difference हायरक तागदी SN1 दना no temperature हाइतारे और less temperature even dana higher temperature is required asi khetna ba malere amana less temperature amana higher temperature
substitution nucleophilic tana substitution tawgadaw mahut sinaba nucleophile amagi mahuta nucleophile ama hapchinba E1 dana amuk elimination tawdoine ko proton amaga halide amaga aduga unsaturated hydrocarbon da conversion tawrni ani ji khenna bata me ko ji taw hoina e gas sida similarities between SN1 and E1 kai kaino carbocation ama phange adagi carbocation phangta di animakta rearrangement tawang ame ken tare ko animakta weak base launai fine difference hai tare dissimilarities animakta if SN1 oramaba amana E1 oramaba SN1 dana low temperature E2 dana E1 dana higher temperature fine adagi SN1 dana substitution tawadawa sidana elimination tawadawa difference yare adui targadi mathaki sida weak base alkyl halide so obviously either SN1 natraga E1 or amani kentare next sidana 10 degree celsius sidana 75 degree celsius sina low temperature sina higher temperature so low temperature oirakta adino kai tauni SN1 dawdawa are adagi higher temperature oiram targadi kai dawbirani hoina E1 elimination reaction so substitution nucleophilic hairpanina ningjingo loina rule ma'am to halogen na thokiba mafamda carbocation phangni secondary carbocation ne tertiary di onba yaroi so no rearrangement in this case next la iba nucleophile kaino CH3OH ne kanana attack tarokani oxygen na karaida chlorine samamba mafamda substitution tawdoi natro adugi so kai phangani product ta CH3 CH and OCH3 and CH3 so substitution nucleophilic khangdragadi you can watch the previous lecture and you can come to this chapter again next E1 harak panen kai dawni khoina elimination dawni it will act as an catalyst fine so sigi chlorine sambamba carbon sina kai kawe alpha thangnaba carbon sina beta carbon da yawriba hydrogen ama thokharni so in this case somde thokera animak chapmani Sajev rule panningai mathau ta de sida so what will be your product CH3 CH double bond and CH2 so yengo khetna bse reagent manai just temperature da khetna bo ukibagi khoina answer manadri se huji exam da di sumaina 10 degree celsius 75 degree celsius piram da bujya sidi just in a random example ama lobai wane piram da bujya so kamai da uni harak ta gadi substitution nucleophilic reaction ki case da khoina temperature se mention tauna deba aduga elimination reaction ki case da khoina sumaina triangle ama yam gani triangle ki meaning kaino heat provide ta in reaction da meaning endothermic na reaction do da temperature khara da heat khara da aduga reaction je proceed tarokani heba fine so elimination reaction oi targadi always khango triangle iramba ma natraga high temperature ma piram gani SN1 gi dadi temperature mention tawroi tawram targadi yamna low temperature ama mention tawbiramani gen tare ne khalle okay example amma ga tawse aduga answer identify taro okay so again pause the video and write down your answers fine 1 2 and 3 okay so reaction piba kanda ahan bada identify taw substitution tawgadra natraga elimination tawgadra adugi matung ina noi answer ani khetna bala ani fine so mathak is the temperature yawe weak base ne makhada weak base yawe but temperature yawde heat yawde so obviously identify tawang ame mathak is na elimination oramani E1 makha is na SN1 so elimination orak ta adi kaidawni khoina elimination tawdoine alpha carbon ga beta carbon gi hydrogen ga fine
फर्स्ट कईदौनी ब्रोमीन थोकी मफम से कई कारणी प्लस कार्बोकेटाइन कई फंगे सिदा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्सरी ओइबे याद्रे सो रीअरेंजमेंट तौरुरनु तौद्रसु सिदा कोई आंसर से आइडेंटिफाई तौबे यारनी सोमदन बीटा सोमदसु बीटा सोमदे थोअदि सोमदे डबल बॉन्ड सोमदे थोगना सोमदा डबल बॉन्ड फंगनी सो हुजी तखोइन तमग्रे आंसर अनिमक फंगनी बट अमाना मेजर ओइरनी अमाना माइनर ओइरनी सो एग्जाम द नोय कंफ्यूज लगता गदि अनिमक इरमो रिएक्शन इरक्ता गदि मोइना मेकेनिज्म इरक्ता गजो नोइना मेजर गी इरमबदा मार्क्स का ओइगेशो सिना कई तारे नोय मेजर रिएक्शन इब कांदा आईयूपीसी लो इरमगदौने आईयूपीसी इरमद्रगदि नोगी मार्क्स फंगरोय अमादि कइनो CH2 CH single bond CH2 and CH3 fine this will be your minor and hujita khoin kai tamgre SN1 ने ना substitution nucleophilic ना H2O दगी nucleophile से करंब लाखना के OH minus so your product will be CH3 CH OH CH2 and CH3 single product will be there so that's your answer for SN1 and E1 reaction क्या है okay amaga pige you have to write down the answer okay pause the video and write down your answer fine 1 2 and 3 okay so sigi question jida again you have to identify which one is E1 and which one is SN1 hoji phawdi hairamani khale sina weak base fine this is your heat so heat yaurokpanina temperature akoina pc limnina kai tare E1 mathakisina SN1 fine so mathakta substitution tawbirani makadana elimination tawbirani got it okay so noina tawdoisina hoji kaino मथकीसिदा क्लोरीन समीबा मफम जे कइनो कार्बन नत्रो सिदा कई कैरी दरकनी प्लस कईगिनो SN1 दसो कार्बोकेटाइन फंगनै बट सिगी कार्बोकेटाइन से कई होइगे प्राइमरी सो सिगी CH3 नत्रगा सिगी CH3 से अमा कइदौनी शिफ्ट तौघरनी एंड कई फंगनी नोइदा टर्सरी कार्बोकेटाइन सो टर्सरी कार्बोकेटाइन से नोइ कई होइरानी CH3 C+ CH2 and CH3 सिदा मूव तौघरनी एंड मखागी CH3 as it is लइघरनी meaning सिगी लैरिबा H2O अटैक का तौदु कराइदनो सिगी कार्बन दा माना सिगी कार्बन दा तौरोय मरम कइनो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट तौथोखरे को सो योर प्रोडक्ट विल बी CH3 OH CH2 CH3 एंड मखादा CH3 मखाई लासे E1 दा एलिमिनेशन की केसेस कइदौनी सीधा कार्बोकेटाइन फंगनी बट रीअरेंजमेंट तौर कइदौखरनी कार्बोकेटाइन दो सीधा फंगनी fine so again double bond lakpa gidi kaidauni alpha carbon leire beta carbon karam bano sina beta carbon and sina beta carbon so you have to write the major answer let's say major answer kai lani som the yaw targati sita nangi ama substituted compound yaurok akari alkyl yaurok le adagi sida double bond yaurok ta di sida ama yaurani करीगुमा सिदा यारक तागदी काय काय यावरे सिदा म यावरे एंड सिदा म यावरे फाइन सो मेजर प्रोडक्ट ता नोई करम बोरनी अदु अम खंगलो CH3 C double bond CH and CH3 CH3 this will be your major product fine minor dana kai kai phangani noidi करीगुमा minor ju iro रख तागदी CH2 double bond C CH2 CH3 and CH3 plus amaga जो फंगनी करीनो चप माने सिगा अमतन यारे सो लोरेसिदा ओके सिदा फंगा जो सिदा फंगस अनि चप माने ना ओके सो सी की अमले रे माइनर अदुगा मथकिसिना मेजर fine so this is your answer for E1 and SN1 exception amaga take tam give it the chlorine bromine and iodine
आयोडीन की आंसर चप मानरकनी जस्ट हेलोजन खेना हलो को खेतना लाक्तोइसिन नोगी फ्लोरीन की केस था यंगो CH3 CH2 CH fluorine and CH3 let's say noida smaina pirak lere weak base ama aduga heat yarok layer se so sida amuk beta carbon ani yawe ko so possibility noida kai lege answer da CH3 CH double bond CH and CH3 plus amadi kaino CH3 CH2 CH double bond and CH2 so there are two possibility again in case of fluoroalkyl also fine fluoride alkyl so sigi case aso answer possibility ani lai amana mayai smaina highly substituted amana corner da ngahak mamang da kai takhinoida beta carbon de yauriba hydrogen je they act as a proton they will leave when there is a base which means beta carbon are acidic in nature beta carbon je kai daweba acidic in nature oyeba so I open them the eke smaina ko neat and clean da sida amma hydrogen and sida so amma hydrogen yawe fine sigi case ta fluorine yawba case sida hai tare ko alkyl halide sida alkyl fluoride yarok pakanda di more acidic hydrogen will lose faster as compared to the less acidic so identify kamai tawni karam bana higher acidic no karam bana lower acidic no je sida H amma yawe and sida H amma yawe karam bana hena acidic oige je kamai identify tawni yengo sigi leriba carbon sina if sigi hydrogen je lose tawge tari ke dawni electron je mana ke dawni magi rom da withdraw tawrani so carbon da kai charge ke tawrani negative negative कारक पनेना सिगी लेरिबा CH3 से कई प्रॉपर्टी आओगे प्लस आई इफेक्ट की इंडक्टिव इफेक्ट ताखरे को प्लस आई इफेक्ट ओरक पनेना नेगेटिव चार्ज है कइनो इलेक्ट्रॉन वांगिने मसिंग वांगिने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वांगे हेरी ने खोना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वांग बसिदा एल्काइल जिना अमुक का हेना इलेक्ट्रॉन पिछलक तागदी यामना कई ओइखरनी मासे अनस्टेबल ओइखरनी सो सिगी कार्बन जिना सिगी प्रोटॉन जे लूज तौबजे फजन ngam sigi yengase sigi carbon sina kedawe sigi proton je lose tawki taagadi maonda di kaheni plus I effect show tawningai leitre and adui mathakta sigi fluorine sina kai show tawge minus I effect meaning kaino sidagi electron je lose tawgre taagadi kari proton je thokre taadi carbon na kai charge ka horani negative charge and fluorine na kai dawge minus I effect show tawi electron je mana withdraw tawrani meaning inductive effect ki through the inductive effect ki through the Sigi carbon jina hena stability gain tawgharni as compared to this carbon so which means this hydrogen is more acidic fine this hydrogen is more acidic and this one is less acidic so only in case of alkyl fluoride it does not follow Sedgwick rule it follows Hoffman rule Hoffman rule ga Sedgwick rule ka rakhe nai hydrogen alkyl fluoride ki case tadi maje Hoffman rule follow tawi and Hoffman rule ki follow tawi matung ina mana kai hege targeti magi rule jida ki alkyl fluoride tadi more acidic hydrogen na thoki basina hena stable oye major product se pigani hare fine sina kai tare du tin oigi minor so noine khangdoisina chlorine bromine and iodine they follow Sedgwick rule and in case of Hoffman rule it follows in case of alkyl fluoride it follows Hoffman rule so this one will be your minor and this one will be your major Hoffman rule na kai hege harakta agati more acidic hydrogen na lose tawgibaduna hena stable oye aduga Sedgwick rule na kai hege targati more substituted alkene na hena stable oye due to hyperconjugation so animak ki rule khenai mana kai rule follow tawni ba it follow Hoffman elimination reaction or Hoffman rule tang iramazo kaisho kaide yare so Hoffman rule na kai hege major product se karam bana phangdoino more acidic hydrogen na
थोखिबदुना हेना मेजर प्रोडक्ट से ओइगल्लेबा हॉफमैन रूल ददी को कनादा तंग फॉलो तौनी नोइना एल्काइल फ्लोराइड की केस तंग फॉलो तौगदोबा यारे सिदा नोइगी E1 लोइरे मखाला आवदा E2 रिएक्शन E2 elimination reaction. Okay. So example हम लौसे सिचप मानी elimination तौदोइने ना but सिदा देखो ना कई लौरनी strong base and with heat कई फंगनी नोइदा again unsaturated hydrocarbon क्या तारे example हम लौसे अदुगा mechanism इजे मागे CH3 CH2 CH2 and chlorine strong base था let's say alcoholic KOH lower and temperature कई फंगनी नोइदा CH3 CH double bond and CH2 यारे मागी mechanism सिदना single step तलोये just like SN2 reaction को E1 दना कैदौगी कोई ना उचिता 2 step तलोये अदुगा E2 दना it take place in only single step fine okay so CH3 CH hydrogen CH2 and सीधा क्लोराइड हेड से नोइना हुजी लौगिबा एल्कोहलिक KOH से मा यावरगा टेम्परेचर खिदंग वांगदे आरो एलिमिनेशन रिएक्शन गिदी को कैदौगे हरक तागदी सिगी लेरिबा हाइड्रोजन गा सिगी लेरिबा क्लोरीन से पुना थोकतोइने कमाय थोकनी कार्बन गा क्लोरीन सिदा कंपैरिजन तौबदा क्लोरीन हेना इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्क मान कैदौवे इलेक्ट्रॉन से सिदा विड्रॉ तौबंगमे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तौरतादी माउन कई चार्ज कई दहरनी पार्शियली पॉजिटिव कारक पनिन कैदौवे सिगी कार्बन सिना स्टेबल तौनबी दंगता कैदौवे हाइड्रोजन सिदगी इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ तौरनी अदुगा डबल बॉन्ड से फॉर्म तौरनी फाइन सो सिगी सिंगल स्टेप रिएक्शन सिदा ट्रांजिशन स्टेट ओइना फंगनी नोगी कार्बोकेटाइन दी फंगरोय सो कई फंगनी सिदा CH3 CH and carbon का हाइड्रोजन की बॉन्ड पुनः ब्रेक तौरकनी at the same time क्लोरीन की जो बॉन्ड से ब्रेक तौब होरानी क्या तारे को अदुगा डबल बॉन्ड सिदा फंगबा होरानी सिगी स्टेट से कई कौगे है तागदी ट्रांजिशन स्टेट कौने योखना ट्रांजिशन स्टेट एंड लास्ट तक दौड़नी क्लोरीन थोखरनी and hydrogen जो थोखरनी minus having को minus H plus so your final product will be CH3 CH double bond and CH2 got it Cl minus का H plus का पुंज लगा SN HCl विना बाय प्रोडक्ट थोखरनी HCl so statement खरा इसे मागी निंग नबा रिवीजन तौबदा नो कार्बोकेटाइन फंगदे सिदा रिएक्शन इंटरमीडिएट तक कई फंगे हरक तागदी ट्रांजिशन स्टेट फंगे ना हाइगदवा MCQ द यारोम तागदी ट्रांजिशन स्टेट फंगे हाइगदवा सिदा नेक्स्ट ता नोइना स्ट्रॉन्ग बेस सिजनगदौने स्ट्रॉन्ग बेस कई के यावे नोइदा एल्कोहलिक KOH नत्रगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अतोपदी NaNH2 सिजनब याय नत्रगा अमोनिया जो सिजनब याय लोइन मक्से कइनो स्ट्रॉन्ग बेस ने रेट ऑफ लिविंग ग्रुप SN2 अचप मानमने सिजो iodine then bromine then chlorine and last na fluorine क्या अंदर है ओके सीधा जो जब मानी सेजेव रूल फॉलो तरोकनी and fluorine यारों तागदी it will follow Hofmann rule regardless of either it is E1 or E2 chlorine bromine and iodine अहुमा की केस तना सेजेव रूल and fluorine की केस तना Hofmann rule Hofmann dana less substituted are more stable Sedgev dana more substituted are more stable got it okay example खरा फिर क्या identify तौर
ओके SN1 थोकद्रा SN2 थोकद्रा E1 थोकद्रा और E2 थोकद्रा है आइडेंटिफाई तौरो अदुगा मोई मोई फाइनल आंसर से इरो अमता यू कैन पॉज योर वीडियो ओके 3 1 2 3 डन फाइन सो ahumok sida first of all you have to identify SN1 SN2 or E1 or E2 अहानबदा कई पिए अल्कोहलिक KOH ने एंड टेम्परेचर यावरकले हीट यावरक तागदी एलिमिनेशन ओर मनी खंगले अल्कोहलिक KOH से करम बोइगे स्ट्रॉन्ग बेस ओरक तागदी इट विल फॉलो E2 रिएक्शन अदुम आइडेंटिफाई तौरे मखाई लासे सेकंड द एक्वस KOH हरकले गॉट इट सीधा अमुक नोगी क्वेश्चन लाकले SN1 थोकद्रा नत्र SN2 थोकद्रा ये so aqueous KOH also is a strong base but there is no heat involved which means this is an substitution reaction and it is SN2 got it weak base वरम ता अगर देखो ना SN1 लौगरनी and सीधा नोगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पीब्रा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पीब्रा और टर्शियरी जो पीब्रा दु येंगो प्राइमरी वरम ता अगर दी strong base वगैरह weak base वगैरह अदुम SN2 अदुगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पिरम ता अगर दी strong और weak अनिमक्ता SN1 थोकदोवा सेकेंडरी डिग्री पीबा कांदने खोइन SN1 और SN2 दा आइडेंटिफाई तौदोइसे either through strong न्यूक्लियोफाइल पीब्रा नत्रगा weak न्यूक्लियोफाइल पीब्रा अदुगी मतुंगिना लानी रिएक्शन से ग्यान तारे लास्ट लाजे CH3OH से कइनो weak base ने अदुगा मा कई होइगे हीट यारक तरमनेना either SN1 थोकनी नत्रगा SN2 सो यंगो मथकी केस सिदा कई पिरामेनोइदा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पिरम सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पिरम मनेना कदरकनी अगेन SN2 रिएक्शन से थोनी सिदसु ग्यान तारेको ओके येंगो मथकी E2 हैरकले E2 हैरक तादी अहान बदा स्माइना क्वेश्चन पीबजे बोन लाइन पीबजे कंफ्यूजिंग याम ओरक तादी कंडेंस ते एक थो हमता कंडेंस ते एक थो स्माइना यारे ओके सो E2 ददी कइदा हुए E2 ददी कार्बोकेटाइन फंगदेको रीअरेंजमेंट तौनिंगाई लैरो सिददी सो रीअरेंजमेंट तौबा यारोय कार्बन का समनरिबा ब्रोमीन कई कई तौरकनी ब्रोमीन से थोकरनी एंड थंगनरिबा कार्बन दे कदौनी हाइड्रोजन से शिफ्ट तौरनी बट थंगनरिबा बीटा कार्बन ददी हाइड्रोजन अमते याउद्रमनिना माउंददी रिएक्शन लारोय सो नो रिएक्शन आंसर फंगरोय सिदा गॉट इट सेकंड द एक्वस KOH हैरकपनिना कदौनी SN2 तसु कदौवे कार्बोकेटाइन फंगदे एंड ब्रोमीन समंबा मफमदुदा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से थोखरनी सो एज इट इज लानी मागी थे OH लानी थर्ड लाजे थर्ड तसु कइनो SN2 हैरकपनिना न्यूक्लियोफाइल के महत्व कई समझिन करनी नो ये अनौबा न्यूक्लियोफाइल अमा लानी सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट गॉट इट ओके अचुंबा यारोम तारदी वेरी गुड मखा तारसे एग्जांपल अमागा पीगे आइडेंटिफाई तौरो ओके 1 2 and 3 आंसर इवलो रेमनी खले ओके फर्स्ट कई पिए एक्वस NaOH से कई होइगे स्ट्रॉन्ग बेस वरक तागदी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लानी कईगिनो हरक तागदी अखोइना टेम्परेचर अमता मेंशन तौदबगी हीट याउदबगी सो SN1 थोकद्रा SN2 थोकद्रा अहानबदा कइदौनी सिगी लेबा अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी रा सेकेंडरी रा टर्शियरी आइडेंटिफाई तौ माजे कई होइगे समनरिबा कार्बन से प्राइमरी सो प्राइमरी वरक तागदी स्ट्रॉन्ग वगैरह वीक वगैरह मा अदुम कई थोकनी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सो कई फंगनी नोगी प्रोडक्ट से you will get CH3 CH2 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 and OH सब्स्टिट्यूशन तौनबनेना OH का Br का सब्स्टिट्यूशन तौगरनी सेकेंड लास्ट है टेम्परेचर यावरकपनेना हीट यावरकपनेना मा कई लानी एलिमिनेशन रिएक्शन करम बा एलिमिनेशन रिएक्शन नो E1 रा E2 रा
weak base hairappanina weak base ti kai thokani even reaction then even reaction da kai phange noida carbocation phange carbocation shifting tawgani sida phangani carbocation so nogi double bond phangbai possibility sida ma leire sida ma leire ken tare ko so you have to write both the answer CH3 CH2 CH single bond and CH3 this will be your major minor kai laani gyan taramani khale huji phawda lecture myam se sina minor okay if by chance bromine ki mahota fluorine yaro madi kamai dauba E1 hoigera E2 hoigera again your major product will be this one and this one will be your minor product fine E2 oram taragadi carbocation phangaroi so nogi double bond phangwi possibility mafam ama tang werani so this will be your answer and it will be your major product okay answer aduna tang phangdoine na yare last question lage duga elimination reaction ki topic lo shilani okay you can pause your video and you can write down your answer SN1 SN2 E1 E2 karam boidoino aduga identify taw matungda reaction to you yare 1 2 and 3 fine ahanbada kai bi alcoholic KOH ne strong base ne temperature yarokle so elimination reaction werani E2 da makhagi sidi temperature heat yarok tramnina kai werani substitution nucleophilic karam boirani SN1 ro SN2 ro identify taw sigi carbon summary is ama ani and ahum nina kai tare tertiary orek tare kai thokani SN1 got it okay first the E2 harakpanina carbocation phangaroi mana samiba carbon sida engo alpha hydrogen beta hydrogen yawre engo somda miyawe and somda miyawe major product karam banaweni obviously somda more substituted are more stable fine so your product will be major product will be this yare minor di kai werani minor harak tagadi si oibi natraga somdo oibi animak oibi ko sina kai tare noigi major this will be your minor sigil as SN1 substitution nucleophilic type 1 nena sigi chlorine jina lairiba carbon jina tertiary jo oiramnena maunda rearrangement tawdarso yarani kai phangani product adudi H2O nena OH samani sida water alcohol hydroxyl group sileranogi final product for SN1 and E2 gen taramani khale so elimination reaction khangdragadi you go first start making notes and start studying that substitution nucleophilic reaction after that you come here and you can easily answer all this question rewatch it retry question हमको practice ताओ hen gen tarakani yare asigi sida